is who will become the next Chief Minister of the state of Maharashtra. Amid Maharashtra Chief Minister suspense, Home Minister Amit Shah has met Vinod Tawre. A crucial meeting took place between Home Minister Amit Shah and Vinod Tawre ahead of the government formation in Maharashtra. The meeting lasted for nearly 40 minutes. The central leadership is concerned about hurting Maratha community votes if a non-Maratha Chief Minister is made in the state of Maharashtra. A decision has been taken over how the Maratha votes can be retained if Devendra Fadnavis is appointed as the Chief Minister of the state. My colleague Dev Kotak is now joining me on the story. Dev, questions obviously are being raised. Who will become the next Chief Minister of the state of Maharashtra? But at the moment, it seems like all the decks are clear for Devendra Fadnavis to take oath as the Chief Minister once again. But amid all this, a crucial meeting between Vinod Tawre and Home Minister Amit Shah. Well, yes, as you are already aware that there is a stalemate and no final resolution has been found yet. However, BJP, despite getting the kind of numbers, want Devendra Fadnavis as the Chief Minister. However, as you know that since the last 2-3 days and post the results of the recently concluded Maharashtra Vidhan Sabha elections, all the top leaders of BJP, Eknath Shinde, Shiv Sena and Ajit Pawar, the NCP, have been having their own respective meetings as well as meetings together. So the fact that Amit Shah and Vinod Tawre have also met to discuss in terms of who the Chief Minister should be, it definitely does point out to the fact that they have not yet been able to finalize as much as they want Devendra Fadnavis to be there. But of course, as you mentioned earlier as well, that the Maratha community votes are extremely crucial. That is why they're also looking at Devendra Fadnavis as the likely name to take over the Chief Ministerial position for the state of Maharashtra. So these are the kind of details that we have at this point in time, but it will be very interesting to see in terms of how, they don't want to upset the vote bank of the Maratha community voters as well. Thank you, Dev, for giving us all those details. Not wanting to upset the Maratha community in the state of Maharashtra, crucial meeting took place between Vinod Tawre and Home Minister Amit Shah. Now, as the suspense is still on who will become the next Chief Minister of the state of Maharashtra, at the moment it is Devendra Fadnavis who has emerged as the front runner for this position. Top leaders of the Mahayuti alliance are all set to meet Home Minister Amit Shah in Delhi today to finalize the next Chief Minister of the state. This meeting comes in the wake of growing speculation over the leadership within the coalition, which includes the BJP, the Shiv Sena and the NCP. Now, Devendra Fadnavis, Ajit Pawar and Eknath Shinde will attend the meeting with Amit Shah to finalize who will become the next Chief Minister, and also other crucial portfolios will be discussed in this meeting. Clarifying that there is no difference of opinion in the Mahayuti alliance, Devendra Fadnavis reiterated all the three parties will collectively decide on who will become the next Chief Minister. Ahead of the meeting, Eknath Shinde also pledged that he did not wish to be a roadblock in Maharashtra's Vikas and he will accept whatever the BJP's High Command decides. देखिए, हमारे महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। आज एकनाथराव शिंदे साहेबांनी पण प्रेस घेतली
आणि त्याच्यानंतर बावनकुळे साहेबांची प्रेस झाली, ती काही मला ऐकायला मिळाली नाही, कारण मी त्यावेळेस आपल्या इकडे यायला निघालेलो होतो संभाजीनगरला. पण एकंदरीतच उद्या आम्ही तिघही जण दिल्लीला जाणार आहोत. दिल्लीला गेल्यानंतर आमच्या पुढचं सगळं बाकीची चर्चा त्या ठिकाणी होईल आणि त्याच्यानंतर नवीन मुख्यमंत्री, 2 उपमुख्यमंत्री, सरकार ते अस्तित्वात त्या ठिकाणी येईल. हमारे महायुति में कोई विवाद नहीं है. ये तीनों नेता यहाँ दिल्ली आकर माननीय अमित शाह साहब से मिलने वाले हैं. जो हाई कमांड है, नरेंद्र मोदी साहब है, अमित शाह साहब है, जेपी नड्डा साहब है, ये लोग निर्णय लेंगे और मतलब हमें ये जो विवाद है वो जल्दी 1-2 दिन में खत्म होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. और जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जो सलाह देंगे वो सलाह माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, राजेंद्र दादा पवार मानेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है. और ये जो डेडलॉक है मुख्यमंत्री पद का, वो आज या कल तक क्लियर हो जाएगा. ये तो उनका डिसीजन है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि हम कुछ भी पद स्वीकार नहीं करेंगे. तो बाहर ही लोग बोल रहे हैं, ये सही नहीं है. वो तो उनका निर्णय है, वो जो निर्णय चाहे ले सकते हैं और उसके बाद इस पर कमेंट करेंगे. आज ये प्री मैच्योर है.